Welcome back. We have Ayan Jain with us again, AI 16 CSE 2023. He gave us a wonderful description of कि भाई prelims में क्या क्या चीजें उन्होंने last 4 weeks में करी, how to maintain clarity of thought, mindset, उस दिन पे आपको क्या क्या चीजें करनी है. And today we'll pick his brains about what to do for mains. Right, so hi Ayan, welcome again. Thank you so much, sir. Even though this is the same recording session, so कुछ करना पड़ता है. But so this is something that I said to Ayan on the day of the selection also, that in his second attempt he had AIR 87 and in his third attempt he had AIR 16. So there is something that he has clearly figured out कि भैया मतलब how does mains work. So Ayan, can you break it down for us कि what happened in your second attempt, what changed in your third attempt? Right, sir. So I think I'll briefly talk about my mark sheet itself. Essay में both years I had average or below average Can marks. share the mark sheets also. We'll show them on Yes, screen. sir. Definitely, sir. I'll do that. Both years in essay I had around below average marks itself, 104 and 111. Maths optional में last year I had only 243 marks. Paper 2 में it was a abysmally low score, much below my expectations, only 103 marks. This time I had in maths optional I had 311 marks and basically वो 68 marks का improvement paper 2 में आया है. So that I think I've covered on other platforms itself. But the good thing has been that both years I've had a very good score in GS. Last year 463 थे, इस साल 450 हैं. So I think I'll talk mostly about GS itself. ऐसे I think मैंने खुद नहीं figure out किया है. And so sir, talking about GS, number one, I think I can divide it into two parts. Number one is exam को मैं कैसे approach करता था. दूसरा, how did I prepare for it? So exam के लिए my basic strategy was quantity over quality. I used to write a huge number of points and many examples. I did not worry too much about the quality of points. Now, one reason for this is that because मेरा optional थोड़ा intensive रहा है, so I have had to focus more on things which were easy to build upon, but not requiring too much understanding. Even right now, I can admit that मेरी understanding बहुत ज़्यादा solid नहीं है, especially current affairs topics पे. But number of points. इस पे I would like to sort of take up an example and go from there. Like for example, GS3 में 2023 में there was a question: How does e-technology help farmers in production and marketing of agricultural produce? Explain. So how would you attempt this question? How many points would you write? Break it down for us. So number of points I used to always write. For 10 markers, I wrote around 12 to 15 points. And for 15 markers, I wrote around 22 to 25 points, sometimes even more. Again, जो syllabus के topics हैं, like e-governance. I think GS2 में e-governance पे question था, उसमें I wrote more than 15 points in that 10 marker itself. Let me I think, just get the e-governance wala question in discussion over here. So I think here itself I should give a disclaimer that naturally when I'm saying 15 points, तो सारे points अच्छे नहीं होते थे, कुछ points बहुत ही trivial होते थे. But again my approach of quantity over quality, तो नए points लिख देता था, भर भर के बस simple points भी बार बार लिख देता था. And naturally they have to be aligned to the question. They cannot be repetitive also. But as long as they are valid points, I think it counts. मेरा ये simple और मैं 10-12 पॉइंट्स लिख रहा हूँ, तो चाहे कितने भी सिंपल पॉइंट्स हो, मुझे सिर्फ 1 या 2 मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, उससे ज्यादा मिलने चाहिए. दैट वाज द लॉजिक आई वर्कड ऑन. दूसरी चीज दैट इवन दो माय पॉइंट्स यूज्ड टू बी सिंपल एंड समटाइम्स जेनेरिक आल्सो, बट एग्जांपल्स काफी लिख देता था. द अदर थिंग, द सेकंड पार्ट अबाउट माय अप्रोचिंग द एग्जाम वाज अ लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन. कमिटीज, लैंडमार्क जजमेंट्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस, एसडीजीज, आर्टिकल्स, इन सबको मैं बस मेंशन कर देता था. My aim was to write at least one value addition in intro and conclusion of every answer. हो नहीं पाता था हमेशा, but I used to try to just force it. Even if it's not very much relevant there, but topic है, तो मैं लिख ही दूंगा. Let's say urbanization पे question है, तो the data of 35% urbanization of World Bank लिख ही दिया बस किसी कारण से. कुछ और let's say SDG ले लें, तो SDG 11 is again I think sustainable cities. तो urbanization के question में conclusion में बस लिख दिया, this can help us achieve SDG 11. बस इतना, SDG 11 sustainable cities, SDG 12 responsible consumption, बस लिख दिया and उसको box बना दिया. इसमें मेरा logic था that examiner just by seeing these will probably get the impression that this student has done something more than the average person, so deserves slightly more marks. This is again naturally my guess, but मेरे लिए work किया है. Huge number of points and lot of value addition and examples.
दूसरी चीज, एग्जाम में अगेन मेरा रहता था कि पूरा पेपर कंप्लीट करना है एंड एज फार एज पॉसिबल पूरी जगह भरनी है। मेरे लिए एक एडवांटेज रहा था, मेरी राइटिंग स्पीड अच्छी थी एंड मेरी हैंडराइटिंग भी बड़ी थी, तो पेजेस भर लेता था मैं। इवन एथिक्स में आई थिंक जब 5 पेजेस भी होते थे, पूरा एंड टू एंड भर देता था, नो वाइट स्पेसेस लेफ्ट। नेचुरली हैंडराइटिंग की साइज प्लेड अ बिग रोल इन दैट, बट द अदर थिंग दैट प्लेड अ बिग रोल इन दिस इज माई टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। 3 घंटे को मैंने प्रोपोर्शनली डिवाइड किया था फॉर एवरी क्वेश्चन। So for every 10 marker, I used to give around 7 minutes, and every 15 marker, I gave around 10 minutes. वॉच को मैं हर क्वेश्चन के वक्त ही कम से कम 2-3 बार देखता था, तो ताकि ट्रैक पे रहूं। What happens is sometimes we start at our fullest speed, but बीच में stagnate हो जाता है, रियलाइज नहीं होता है। इट्स ओनली इन द लास्ट 1 hour वी रियलाइज दैट काफी कुछ बचा है, एंड फिर हम रश करते हैं, तो आंसर्स की क्वालिटी उतनी कंसिस्टेंट नहीं रहती। बट इफ यूर मैनेजिंग एवरी सिंगल क्वेश्चन, तो थ्रू आउट वो स्पीड मेंटेन रहती है। I think there's a quotation also that if you manage your daily goals, then your yearly goals get finished. On those lines. तो अगर आप हर क्वेश्चन को सही से मैनेज कर रहे हो टाइम में, तो आपका पूरा पेपर भी एकदम अच्छे से एंड टाइम पे कंप्लीट होगा। Following this time management strategy will ensure that you're completing the paper, you're covering every question. Now naturally सब लोगों का डिफरेंट होता है, कुछ लोग अर्ली मैनेज करते हैं टाइम को, कुछ लोग 30 मिनट्स में, ऐसा कुछ। So whatever suits the person as per their experience of mock test. Again, ये मेरा एक्सपीरियंस था। How many दूसरी mock चीज tests आई did you थिंक give? नॉट टू मेनी सर। मेंस के लिए फॉर जीएस आई फोकस्ड अ लॉट मोर ऑन रिवीजन। आई थिंक अगर टाइमलाइन ही बता दूं तो अक्टूबर 2021, आफ्टर नॉट क्लियरिंग माय फर्स्ट प्रीलिम्स, that is the time where I did most of my answer writing, where I did a lot of answer writing. I centered my revision around answer writing itself. Programs भी join किए, mock test भी दिए, but it's कहाँ पे around क्या that time only. प्रोग्राम? Which सर institute? फोरम आईएस का AWFG ज्वाइन किया था, एंड जीएस स्कोर का सीएसई क्वालिफायर। सो व्हाट आई नोटिस इज दैट बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट तब नहीं हुआ, बट व्हेन आई अडॉप्टेड दिस स्ट्रेटेजी ऑफ टॉपिक वाइज नोट्स और पॉइंट फॉर्म में एंड उनको रिवाइज करना, तब मुझे खुद मॉक टेस्ट में दिख रहा था कि मेरे ज्यादा पॉइंट्स भी लिख पा रहा हूँ, बेटर भी हुआ है। इनफैक्ट इफ आई मे देन आई थिंक लोग पीपल कैन रेफर टू माई कॉपीज ऑफ फोरम आईएएस। वो इज बिफोर दिस स्ट्रेटेजी, वो उतनी अच्छी नहीं है कंपेयर टू दैट। इफ पीपल लुक एट माई विजन आईएएस की कॉपीज, तो इवन लास्ट ईयर की कॉपीज, नॉट इवन दिस ईयर, उसमें भी क्लियर इंप्रूवमेंट एक दिखेगा, स्पेशली इन द नंबर ऑफ पॉइंट्स। मेरी स्ट्रेंथ जो थी ऑफ हैविंग गुड इनफ राइटिंग स्पीड, तो मैंने रियलाइज किया दैट फॉर मी रिविजन इज मेकिंग मोर सेंस देन मॉक टेस्ट। आई थिंक लास्ट ईयर बिटवीन माई प्रीलिम्स एंड मेंस आई गेव 2 मॉक टेस्ट फॉर जीएस। उसके पहले सीएसई 22 में आई गेव 3 मॉक टेस्ट फॉर जीएस। उसके पहले मैंने 5-7 टेस्ट दिए थे। सो जीएस का टोटल अराउंड 10 टेस्ट दिए हैं। मैथ्स के मैंने दोनों साल में अराउंड 20 टेस्ट दिए हैं एंड बाकी प्रैक्टिस। बट जीएस में इट वाज फ्रॉम माय एक्सपीरियंस दैट आई रियलाइज दैट फॉर मी रिविजन सीम्स टू वर्क बेटर। बट अगेन आई थिंक डिस्क्लेमर दे ही देता हूँ दैट फॉर एवरीवन इट्स डिफरेंट। अ लॉट ऑफ पीपल प्रेफर टू राइट मोर मॉक टेस्ट एंड उनसे इंप्रूवमेंट भी होता है। अगर लोगों को ऐसा लग रहा है दैट नए क्वेश्चन में वो पॉइंट्स लिख नहीं पा रहे हैं या फिर टाइम मैनेजमेंट का इशू हो रहा है, तो दे शुड गिव मॉक टेस्ट। बट खुद को एक असेसमेंट लाना है कि मॉक टेस्ट से ज्यादा हेल्प हो रही है या रिविजन से। नाउ आई थिंक इसी नोट से कनेक्टेड मैं बता देता हूँ अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ माई जीएस स्ट्रेटेजी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट। बेसिक नंबर वन थिंग वाज दैट स्टैटिक पे ज्यादा सेंटर था मेरा। फॉर मेंस आई डिड वेरी मच कॉम्प्रोमाइज ऑन करंट अफेयर्स बिकॉज मैथ्स ऑप्शन को काफी टाइम देना था। स्टैटिक के लिए मैंने क्या किया, GS 2 and 3 खासकर में सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू माइक्रो टॉपिक्स। हर टॉपिक का इन डेप्थ, अगेन लाइक आई मेंशन एग्रीकल्चर, आपने भी जो एग्जांपल दिया, टेक्नोलॉजी फार्मर्स बहुत क्लियरली सिलेबस में मेंशन है, मार्केटिंग बहुत क्लियरली है, स्टोरेज ट्रांसपोर्ट है, एंड क्वेश्चंस आते हैं एवरी ईयर। आई थिंक देयर इज अ क्वेश्चन ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इट्स वेरी वेल देयर इन द सिलेबस। मार्केटिंग या स्टोरेज या ट्रांसपोर्ट से आई थिंक एवरी ईयर देयर हैज बीन अ क्वेश्चन कमिंग, एटलीस्ट लास्ट 2-3 साल में तो आया ही है। तो इन टॉपिक्स को मैं सब हेडिंग्स बनाता था अपने नोट्स में, एंड आई वुड नोट डाउन एटलीस्ट 15 to 20 पॉइंट्स। नाउ पॉइंट्स में मेरी क्या अप्रोच होती थी, अप्रोच ऑफ डायमेंशंस। कई चीजें क्या होती हैं, अब अगर मैं मार्केटिंग को ले रहा हूँ, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, व्हाट आर द इश्यूज इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, व्हाट आर द पोटेंशियल्स ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस, बट डायमेंशंस ब्रॉडली सेम रहते हैं। लेट्स से एक हो गया अबाउट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की कमी कैन बी एन इशू, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इज अ वे फॉरवर्ड, एंड इंफॉर्मेशन मिलेगा इज ऑल्सो अ पोटेंशियल ऑफ मार्केटिंग। फिर बात करें प्राइस डिस्कवरी, अगेन दिस इज अ पोटेंशियल ऑफ मार्केटिंग, प्राइस डिस्कवरी नहीं है इसलिए मार्केटिंग हो नहीं पा रही है। देन स्टोरेज, तो ये डायमेंशन में प्रिपेयर करता था ताकि एग्जाम हॉल में देन आई हैव टू सिंपली मॉडिफाई दैट पॉइंट वेरी वेरी मार्जिनली, तो रेप्लिकेट करना बहुत आसान था।
The more important part was revising these notes a good number of times, 5-6 times at least. ठीक So है. मेरी, again, the thing that I What learned from was experience, sort of the thickness of your notes? size. How many pages? हाँ, so yes, exactly sir. जो पहले मैंने नोट्स बनाए थे, Hmm. वो बुक्स पढ़ के उनसे नोट्स, दो दे वर क्वाइट बल्की. आई Hmm. थिंक एस्टिमेट तो नहीं है मेरा, बट दे वर क्वाइट बल्की. तो Hmm. दूसरा जो मेरा लेयर ऑफ नोट्स था, व्हाट आई कॉल्ड माइक्रो नोट्स. तो Hmm. उनका पर्पस ही ये था, समथिंग अगेन आई लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, पॉइंट फॉर्म होना है एंड कंसाइज होना है. बिकॉज व्हाट आई रियलाइज इज दैट बल्की नोट्स को रिवाइज करने में बहुत टाइम लग जाता है, Hmm. स्पेशली बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस. तो फिर वो खत्म ही नहीं होते हैं, नंबर ऑफ इटरेशन ज्यादा नहीं कर सकते हम. Hmm. एंड मेंस की अगर बात करूं, नोट्स की यूजिबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. Hmm. बल्कि नोट्स होना या इवन कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स होना इज नॉट ऑफ मच वैल्यू अनलेस यू आर एबल टू यूज दोज नोट्स इन योर एक्चुअल एग्जाम. कई लोग मुझे ये बताते हैं कि नोट्स में तो था बट एक्चुअल एग्जाम में नहीं यूज कर पाए. सो Hmm. दैट इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया. जो आपके नोट्स में है वो आपको यूज कर पाना ही है. तो Hmm. फॉर दैट यूजेबिलिटी, कंसाइसनेस इज की एंड पॉइंट फॉर्म में होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड थिंग इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड. रिसेंटली समवन आस्क्ड मी अ डाउट दैट करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक को इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं आंसर्स में. तो माय Hmm. आंसर वाज कि जो भी आपके नोट्स में है एक जगह पे होना चाहिए, सब कुछ एक ही जगह पे होना चाहिए. इट Hmm. शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड Hmm. पॉइंट फॉर्म. How इसको do मैं you 4-5 बार. organize like the sort of larger notes का organization क्या है? Let's say for example GS3 के notes है तुम्हारे, तो how are they organized? सो एज सच बस हर टॉपिक का डिफरेंट डिफरेंट था. एग्रीकल्चर का अगर मैं एक पीडीएफ ले लूं तो उसमें डिफरेंट हेडिंग्स थी, मार्केटिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, ई टेक्नोलॉजी, पीडीएस, सारे डिफरेंट हेडिंग्स थी, एक कंबाइंड पीडीएफ. एंड मिला के भी आई थिंक टोटल 20 पेजेस का था, बिकॉज पॉइंट फॉर्म में था. Hmm. एक पॉइंट, एक पॉइंट इज जस्ट टेकिंग वन लाइन, पैराग्राफ तो लिखने ही नहीं है. बिकॉज दिस वाज माय सेकंड लेयर ऑफ नोट्स. Hmm. जब हम पहली बार नोट्स बनाते हैं तो बल्कि बनते ही है, इट्स Hmm. इम्पॉसिबल. एंड ऑल्सो जब हम पहली बार नोट्स बनाते हैं तो इनफ क्लैरिटी नहीं होती है एग्जाम के बारे में. Hmm. अगेन व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट ओवर टाइम एंड टॉपर कॉपीज देख के समझ आता है कि किस तरह के नोट्स होने चाहिए. एक्सपीरियंस से ही ये चीज मुझे समझ आई. फिर मैंने इस पे काफी टाइम भी इन्वेस्ट किया. इवन दो आई एम टेलिंग यू दैट दिस नोट्स आर जस्ट 20 पेजेस, बट वो नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगी, बहुत सारे सोर्सेज भी रेफर किए. हाँ. So, I think this reminds me of a very important aspect of my mains prep, which I should mention right now itself, is topper copies. Hmm. Toppers की copies मैं बहुत बार देखता था. Not at all only to analyze how they are writing, but for extracting content. Ethics खासकर, ethics में I had 127 marks last year and 138 marks this year. श्रुति शर्मा मैम की कॉपी से तो मैंने नोट्स बनाए हैं, टू सम एक्सटेंट लिटरली. मतलब उनका वैल्यू एडिशन आई यूज्ड टू Hmm. नोट डाउन, उनकी Hmm. कॉपीज पढ़ रहा हूँ, जो यूजफुल लगा आई वुड नोट इट डाउन, एंड एक्चुअल एग्जाम में यूज भी हुआ. Hmm. सेम गोज फॉर गरिमा लोहिया मैम की कॉपीज. तो टॉपर कॉपीज से मैं आई यूज टू लुक एट देम एज अनदर सोर्स ऑफ कंटेंट. Hmm. इनका मल्टीपल एडवांटेजेस हैं. नंबर वन इज दैट इट्स इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट. नॉट ओनली क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट बट क्वेश्चन आंसर उस टाइप के जो एक्चुअल एग्जाम में आने हैं. प्रीलिम्स में दिस मे नॉट वर्क, मेंस में दिस वर्क्स बिकॉज सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज से फेयर रिफ्लेक्शन होता है एग्जाम में, Hmm. बिकॉज वो सिलेबस से ही क्वेश्चंस बना रहे हैं. सेकेंड थिंग इज जो टॉपर्स अपने आंसर भी लिखे, दे आर इन पॉइंट फॉर्म, दे आर Hmm. वेरी इजी टू रेप्लिकेट. थर्ड थिंग इज दैट वो ऑलरेडी जो है वो टॉपर्स की पूरी जो नॉलेज उनने गेन की है ओवर द इयर्स, वैल्यू एडिशन, एग्जाम्पल्स, पॉइंट्स, सब कुछ उनने उसमें लिखा हुआ है. तो Hmm. उसको सिंपली मुझे एक्सट्रैक्ट करना है और अपने आंसर्स में यूज करना है. तो बेसिकली आई एम अवॉइडिंग री इन्वेंटिंग द व्हील. जो बाकी लोगों ने पढ़ के अपने आंसर में यूज किया है उसको मैं एक्सट्रैक्ट कर ले रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, तो अपने आंसर में भी यूज कर पाऊंगा. टॉपर कॉपीज, अगेन यू वर टॉकिंग अबाउट लास्ट वीक फॉर प्रीलिम्स. Hmm. मेंस में लास्ट 2-3 वीक्स में मैं काफी इनको रेफर करता था. Hmm. GS1 आई थिंक वाज वन पेपर विच मुझे काफी वीक लगता था, Hmm. बिकॉज हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का सिलेबस उतना क्लियरली आउटलाइन नहीं है एंड दे आर वेरी बिग टॉपिक्स. Hmm. अगेन थोड़ा यहाँ कॉम्प्रोमाइज था. तो GS1 में मैं टॉपर कॉपीज काफी देखता था कि उसी से मेरा रिवाइज हो जाए. इशिता मैम की कॉपीज देखी, श्रुति मैम की. आई थिंक आई मेंशन सम अदर टॉपर्स आल्सो, मुस्कान डगर मैम, देन एथिक्स के लिए खासकर गरिमा लोहिया मैम, श्रुति शर्मा मैम, गुंजिता अग्रवाल मैम. बट फॉर जीएस, मुस्कान डगर मैम एंड श्रुति शर्मा मैम, ये तो बहुत ही अच्छी कॉपीज हैं, इनको Hmm. देखना ही देखना है. एंड वन मोर थिंग इज लुकिंग एट द कॉपीज ऑफ रीसेंट टॉपर्स इज हेल्पफुल, कि कोई कंटेम्प्रेरी अफेयर्स का क्वेश्चन है तो वो भी थोड़ा Hmm. कवर हो जाएगा. सो टॉपर कॉपीज हेल्प मी अलॉट इवन एज आई वाज टॉकिंग अबाउट माय नोट्स. Hmm. तो आई थिंक थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली ही ले लो. नोट्स का आइडिया एज आई मेंशन टू यू इस सिलेबस के टॉपिक्स को लेके पॉइंट फॉर्म में बनाना है. अब वो पॉइंट्स कहाँ से लाने हैं? नंबर वन थिंग वाज फ्रॉम माय प्रीवियस नोट्स इटसेल्फ, मैं पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ. नंबर टू इज फ्रॉम टॉपर कॉपीज. नंबर थ्री इज फ्रॉम सोल्यूशन पीडीएफ्स ऑफ टेस्ट. Hmm. सो वेदर आई हैव गिवन द टेस्ट और नॉट,
अगेन इसमें फोकस उन क्वेश्चन पे रहता था जो क्लियरली सिलेबस से मैप्ड है. अगर कोई स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है तो आई वुड स्किप छोड़ दैट. दो। बट अगर कोई बड़ी थीम है, क्लियरली अगर जुडिशरी एक थीम हो गई, एजुकेशन एक थीम हो गई, मतलब सोशल सिलेबस के जस्टिस एक थीम टॉपिक्स हो गई. जो जो मोटे मोटे लिखे हाँ, रहते हैं थीम्स। हाँ, इनफैक्ट द रीजन व्हाई आई मेंशन एजुकेशन सोशल जस्टिस एंड ऑल, कई हम्म। लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये भी सिलेबस में है, ये भी पढ़ना है. बट एवरी ईयर वन क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम एजुकेशन और हेल्थ ऑफ सोशल जस्टिस. हम्म। सिलेबस में क्लियरली है. तो सिलेबस के टॉपिक्स को तो छोड़ना ही नहीं है. हम्म। सारे टॉपिक्स पे सम व्हाट यू कैन कॉल सम बेस मटेरियल होना चाहिए, जिससे आप एक्चुअल एग्जाम में मॉडिफाई करके आंसर लिखने वाले हो. ठीक नाउ है। स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट GS1, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री में वही इश्यू है दैट ब्रॉड लिखा है, नॉट माइक्रो लेवल पे. उनमें द गुड थिंग इज PYQ थीम्स रिपीट हो रही हैं. हम्म। ओशन सर्कुलेशन, एयर प्रेशर, आर्कटिक एंटार्क्टिक, हम्म। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2. तो इन थीम्स को मैंने पकड़ के नोट्स बना लिए. हम्म। दिस वॉज वॉट यू कैन कॉल द लो हैंगिंग फ्रूट्स ऑफ दीज टॉपिक्स. हम्म। बाकी मैं उतना अच्छे से नहीं कर पाया हमारे एंड नोट्स डिजिटल इसीलिए थे, हैंड रिटन थे? डिजिटल है सर. आई एम वर्किंग ऑन शेयरिंग इट, शेयरिंग दोस्त आपके साथ भी कर ही दूंगा. डेफिनेटली, मतलब हाँ. यू लाइक टू अटैच एंड हाँ, on that note, I think I have something for you. I think that'll be. Did I share your domain with you? आई थिंक सो. शायद लास्ट ईयर किया था सर, बट आई थिंक मिस तो आउट हो डालो गया ना था फिर मेरे ये end से. सारा, मतलब आई थिंक दैट्स हाँ, व्हाई अब यू करता शुड हूँ. शेयर इट आइडियली, आई थिंक यस सर. मतलब चलो, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग. हाँ, डेफिनेटली. मतलब what I can simply share is ayanjain.com and you can find things over there. हाँ, यस यस सर. And sir, I think last aspect is about value addition. तो Hmm. वैल्यू एडिशन में अगेन वन थिंग आई डिड प्रॉब्ली डिफरेंटली फ्रॉम अदर टॉपर्स इज Hmm. दैट इनको भी मैंने टॉपिक वाइज अरेंज किया. ऐसा नहीं कि सारा डेटा एक जगह, सारी कमिटीज एक जगह. Hmm. अगर टॉपिक है अगेन अर्बनाइजेशन है, तो जो रिलेवेंट वैल्यू एडिशन है एक साथ अर्बनाइजेशन के नीचे SDG 11, देन 35% का डेटा, कोई बेस्ट प्रैक्टिस है तो भी वहीं पे. तो सारी चीजें एक साथ थी, तो अगेन यूजेबिलिटी बढ़ गई. अगेन वन थिंग आई विल रीइंफोर्स इज दैट नोट्स के कोरिस्पॉन्डिंग यूजेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट. जो Hmm. भी नोट्स है आप एक्चुअल एग्जाम में यूज कर पाओ, इस तरह अपने नोट्स बनाओ. चाहे टॉपर्स के नोट्स भी यूज कर रहे हो, इस तरह से उनको एक्सट्रैक्ट करके अपने नोट्स में लाओ कि एक्चुअल एग्जाम में यूज हो पाए. ठीक है. So essentially, मतलब your ruthless prioritization is also visible over here, where you have taken the best of every sort of resource. कि भाई टॉपर कॉपीज में से तुमको कंटेंट मिल रहा है वो तुम ले रहे हो, टेस्ट के सॉल्यूशंस में से तुमको मिल रहा है वो तुम ले रहे हो, and all of this is getting collated at one single location, which are your micro notes. हाँ. यस. And once you have made these sorts of micro notes, so then again, this is an absolutely wonderful resource जो कि आप उसको ही रिवाइज कर लो. तो भाई हाँ, मतलब you have content for every answer. अब वो तुम्हारे ऊपर है कि भाई तुम लिख पाते हो नहीं लिख पाते हो क्या है, क्योंकि then that becomes the other skill. You have the raw material and then raw material को translate कैसे करना है, that's on you. हाँ, I think डेफिनेटली. that's pretty solid. And Ayan का जो domain था, that is ayanjain.in, not .com, because ayanjain.com was taken. So I'll share that with you again, and I think you can share your notes over there. So the idea here is कि mains is also sort of a very rigorous. मतलब प्रीलिम्स एक दिन का एग्जाम है. प्रीलिम्स में ठीक है माइंडसेट इज इंपॉर्टेंट, बट मेंस में माइंडसेट इज मच 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 मोर इंपॉर्टेंट. सो व्हाट डू यू थिंक एंड लाइक हाउ डेफिनेटली. डिड यू मैनेज योरसेल्फ इन दैट? कि भाई फर्स्ट टाइम व्हेन यू वर गिविंग मेंस इन योर सेकंड अटेम्प्ट, तो ऑब्वियसली इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस, तो देयर यू कैन नॉट बैंक ऑन like in your second हाँ. attempt when you're giving mains, so that's your first experience of mains, right? तो जैसे कि prelims में you were saying कि the experience helped you a lot. You did not have a lot of experience in your first mains of that sort, right? तो मतलब how did you manage that mental pressure, क्या करे ना करे? Because obviously 463 you scored in GS, तो मतलब you didn't seem to manage it well. सर, वन गुड थिंग अबाउट GS मेंस इज दैट उसमें वन थिंग दैट आई थिंक माय सीनियर टोल्ड मी इज दैट यू कैन नॉट मेस अप GS मेंस. Hmm. अगर पढ़ाई अच्छे से की है, अच्छे से रिवाइज किया है, तो एक्चुअल एग्जाम में मैनेज कर लोगे. दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रीलिम्स, जहां पे अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है, अगर आप पैनिक कर गए, तो इट कैन कंप्लीटली थ्रो यू ऑफ. Hmm. तो मेंस में, इवन इन माय फर्स्ट मेंस, आई डिड नॉट फील पैनिक एज सच. ऐसे में जरूर हुआ था क्योंकि वो पहला ही पेपर होता है, तो इवन हाथ कांप रहे होते हैं जब लिखना Hmm. शुरू करते हैं. बट बाय द टाइम इट केम टू GS, आई डोंट थिंक आई फेल्ट पैनिक. Hmm. ना फर्स्ट मेंस में ना सेकंड में. मैथ्स में डेफिनेटली पैनिक हुआ. अगेन दिस इज द काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स वेयर पैनिक यूजुअली हैपेंस. Hmm. CSAT हो गया, प्रीलिम्स हो गया, इवन इंटरव्यू. दोज आर द पेपर्स जहां पैनिक होता है. माइंडसेट इज मोर इंपॉर्टेंट. Hmm. मेंस GS की बात करें तो पैनिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट इज परसिस्टेंस.
नंबर वन, बिकॉज 2-3 पेपर लिखने के बाद हाथ पेन करने लग जाता है, बट यू हैव टू राइट अनदर पेपर. हाथ लिटरली कंटिन्यूसली पेन कर रहा होता है, बट यू जस्ट हैव टू राइट. मतलब आई रिमेम्बर इवन फर्स्ट मेंस के बाद नीचे जब जा रहा था, लोग स्टेयर्स पे यही बोल रहे थे कि अगला पेपर कैसे लिखेंगे. बट पॉइंट इज, इवन थ्रू दैट पेन यू जस्ट हैव टू राइट, बिकॉज इट्स ओनली अबाउट दोस 3 आवर्स. उसके बाद जाके रेस्ट कर लो, घर जाके फिर से मत आंसर्स लिखने लग जाना. हाथ को रेस्ट मिल जाएगा. एंड ड्यूरिंग दोस 3 आवर्स परसिस्टेंस बनानी है. नंबर वन फॉर हैंड पेन. सेकेंडली, बिकॉज मेन्स का पेपर 3 घंटे में कंटिन्यूस टाइम क्रंच होता है. 3 hours are very less for writing all those 50 pages, even 55 for ethics. तो continuously उस fighter mode में रहना है. Again, what helped me for that, as I mentioned earlier, is my time management strategy of per question. Continuously ही वो mind में था कि full sprint करना है. ऐसा नहीं कि starting में lax हो गया या बीच में lax हो गया. Continuously वो sprint mode activated था. तो I think that allowed me to write to my fullest potential. ऐसा नहीं हुआ, मुझे ये रिग्रेट बिल्कुल नहीं हुआ कि I could have done better in those 3 hours. पढ़ाई डेफिनेटली और कर सकता था, बट इन दोस 3 आवर्स आई थिंक आई वाज एबल टू ब्रिंग आउट माय बेस्ट. GS1 में प्रॉब्ली एक रिग्रेट जो मुझे रहा कि इस बार मैंने मैप्स ज्यादा नहीं बनाए, विच आई थिंक लास्ट ईयर वर्क फॉर मी, बट दिस ईयर आई गॉट अ लोअर स्कोर. बट अगेन ओवरऑल GS में इन दोस 3 आवर्स हैविंग परसिस्टेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग काम. मैथ्स ऑप्शनल जैसे पेपर्स में आई थिंक द बिगेस्ट लर्निंग वाज दैट अगेन काम रहना है. आइरोनिकली मैं लास्ट ईयर ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था, उसके कारण पेपर 1 खराब हो गया मेरा. बट दिस ईयर आई टोल्ड माई सेल्फ टू पेपर स्टे 1 या काम. पेपर 2 में कम थे ना तुम्हारे? सर पेपर 2 में कम थे, बट पेपर 1 खराब हुआ था. पेपर 2 अच्छा हो गया था. पेपर 1 थोड़ा ये आयरॉनिक रहा दैट दिस ईयर आई थॉट पेपर 1 वेंट मच बेटर देन लास्ट ईयर, बट सेम मार्क्स है 140 एंड 142. पेपर 2 लास्ट ईयर भी अच्छा गया था, इस ईयर भी अच्छा, बट इस ईयर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 68 और 69, 66 मार्क्स. Yeah. But I think वहाँ there is a more a difference of writing style and rigorousness. Again, these are things that I've covered in maths talk separately. बाकी लोगों के लिए तो रेलिवेंट होगा नहीं, बट डेफिनेटली माइंडसेट कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए व्हाट आई डिड इज आई टॉक टू सम सीनियर्स कि कैसा होता है. तो अगेन उन्होंने यही बताया कि मेंस में वो प्रेशर नहीं फील होता है जो प्रीलिम्स में फील होता है, बट परसिस्टेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रेस्ट करना इंपॉर्टेंट है. वन वैल्यूएबल एडवाइस आई गॉट इज, जो मेंस के बीच के जो 2 घंटे होते हैं, लंच ब्रेक होता है, उसमें जबरदस्ती ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना, रेस्ट कर लेना, ताकि उन दोस 3 आवर्स यू आर एबल टू डू योर बेस्ट. एंड मैंने वही किया. So I think these are a few things that you can reach out to your seniors or friends. Basic experience मांग लो. Even when you don't have first hand experience, second hand experience also helps to some extent. Okay. तो हाँ, again I would repeat this only कि pressure उतना ज्यादा मेंस GS में नहीं था जितना persistence का रोल था. So I think this is also you've given a मतलब काफी क्लियर आपने ब्रेकडाउन दे दिया है दोनों चीजों का. एंड मतलब विच इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई वुड हाईली हाईली रेकमेंड दैट यू शेयर योर नोट्स, बिकॉज आई थिंक इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि काफी Yes. मेहनत तुमने कर ली है ऑलरेडी, व्हिच आई थिंक फ्यूचर एस्पिरेंट्स कैन कीप एडिंग टू एंड यू नो मूविंग ऑन फ्रॉम देयर एज दे सी फिट. तो अयान, व्हाट डिड यू डू फॉर इंटरव्यू फाइनली? सर इंटरव्यू में इस बार मेरे मार्क्स ड्रॉप हुए हैं काफी लास्ट ईयर से. सो लास्ट ईयर 187 थे, एंड दिस ईयर आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर इंटरव्यू. इस बार तो मतलब I was proud of how much effort I put into interview, but इस बार 160 आए, despite the fact that इस साल average भी much higher है. So I don't know if what I did was right or not. Probably one thing that my teachers used to also tell me is that this year I was more stressed about the interview. Probably I took it a bit too seriously, and शायद exam hall interview में भी उन्हें examiner interviewers को लगा हो that he's too stressed or too serious. हो सकता है वो वाइब्रेंट पर्सनैलिटी ना बाहर आ पाई हो उस कारण. सो प्रॉब्ली बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बट डेफिनेटली पढ़ना तो बहुत चाहिए फॉर इंटरव्यू. अगेन देन आई डोंट थिंक आई शुड टॉक टू मच अबाउट इट. So like in between all of this, how did you अब जैसे like think of any system when it is functioning, even if it is functioning almost perfectly, produces waste. So given the fact that you're running your mental systems and your physical systems at such high efficiency, तो मतलब how did you deal with that waste? कि भाई मतलब वो जो waste thoughts आते हैं, कभी थक गए, कभी मन नहीं किया, क्या किया? Like how did you deal with all of those things while preparing for mains? सर टायर्डनेस का तो आई थिंक वाज वेरी क्लियर टू मी बिफोर एंड इटसेल्फ दैट टायर्डनेस आएगी ही, तो पहले से ही प्रायोरिटाइज करना है. अगेन दैट रूथलेस प्रायोरिटाइजेशन वाज इन एंटिसिपेशन ऑफ द फ्यूचर टायर्डनेस, बोर्डम, डिस्ट्रैक्शंस, एवरीथिंग. तो जब पता ही है कि होना है तो अकॉर्डिंगली प्रायोरिटाइज करो.
what I would tell myself that हो सकता है that अगले 3 दिन सिर्फ 3 घंटे पढ़ाई हो, तो भी वो 3 घंटे बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज करना है. टॉकिंग अबाउट डाउट्स, सेल्फ डाउट वगैरह, वो भी होता ही है. One thing I did is I used to stay in touch with a few friends from my college who were giving the exam. तो रियलाइज होता था दैट वो लोग भी सेम चीज से गो थ्रू कर रहे हैं, प्लस उनसे बात करके थोड़ा बेटर तो फील होता ही था. आई वॉज नॉट इन ORN, आई वॉज प्रिपेयरिंग फ्रॉम माई होम, तो थोड़ा सेपरेट भी हो ही गया था दोस्तों से. सेकेंड अटेम्प्ट में आई हैड लेफ्ट व्हाट्सएप ऑल्सो कम्प्लीटली, तो दोस्तों से ईमेल पे बात करता था. बट स्टेइंग इन टच विद अ फ्यू फ्रेंड्स वाज गुड. तो आई थिंक डाउट्स के लिए दैट इज अ गुड थिंग. बट डेफिनेटली डाउट्स रहते हैं. आई थिंक इट्स to some extent it's also about enduring those doubts rather than trying to overcome it. I think there is a famous quote also that not all problems have to be solved, some have to be managed. Yeah. So उस extent में being prepared for such doubts and staying strong, it's a matter of staying strong for those last 1 or 2 weeks near the exam. एग्जाम जैसे ही खत्म होता है, थोड़ा वापस से अच्छा फीलिंग आ जाती है irrespective of how the exam has gone. बट एग्जाम के पास पीक होती है डेफिनेटली, एंजाइटी, सेल्फ डाउट वगैरह. So repeatedly, I think we staying strong and telling yourself, reminding yourself that you've prepared extensively, you are ready for it, and that everyone is facing these doubts. I think these things help a lot. I think that's a pretty solid idea कि भाई सेल्फ एफर्मेशन के साथ आप चलो एंड साथ के साथ भाई बी प्रिपेयर्ड हो दी कि भाई मतलब फटेगा, कुछ ना कुछ फटेगा एंड वो डील करना है, हैंडल करना है. And I think rest, Ayan has pretty much summed it up very nicely by himself. I don't need to add anything to it. Have you ever considered a career in teaching? No, sir, not yet, sir. But like even in service, even as an IAS officer, you will be required to teach a number of things to a number of people because I think you'll do well in service, at least on that front in that regard, because you have a very clear exposition. जो भी तुम्हें लग रहा है, सोच रहे हो, समझ रहे हो, वो बहुत clearly तुम बता पा रहे हो, which is rare, but which is a superpower. When you go out into the world, that's what you realize for the first time. Ki people, this clear thinking and clear being able to communicate what you're thinking. So I think we'll end this highly informative session for mains here. And thank you all for watching. If you haven't, if you're preparing for 2025 or some other exam, you can check out Ayan's previous video, which was on prelims and the tips that people can follow there. बुक लिस्ट वगैरह ये सब जो चीजें हैं, आई एम श्योर अयान विल शेयर इन टाइम जो उनके नोट्स वगैरह हैं. तो ईमेल आईडी पे करते हैं, टेलीग्राम पे करते हैं, जहां भी करते हैं, you'll find the link to that in this video description. So again, thank you Ayan for your time. It was wonderful talking to you. Thank you so much, sir.